Hello students, welcome to the science class. Chapter name is Conservation of Plants and Elements and Animals. Chapter name is Conservation of Plants and Animals. I am Kanchan Singh from RKG Educational College. So let's start. Our chapter name is Conservation of Plants and Elements. So this is our today's topic. It is conservation of plants and elements. First, we discuss about deforestation. ये क्या होता है? The clearing of the forest and using the land for other purpose is called a deforestation. मतलब जो हमारा जो फॉरेस्ट है, जो जंगल है, उनका यूज किसी लैंड या अदर पर्पस के लिए किया जाता है, मीन्स उनको हम लोग काट देते हैं जंगलों को, तो इसी को हम लोग डिफॉरेस्टेशन कहते हैं. मीन्स कुछ कारण दिए हैं. द कॉज फॉर डिफॉरेस्टेशन आर फर्स्ट, प्रोक्यूरिंग लैंड्स फॉर कल्टीवेशन, building houses and factories, using woods as a fuel or making furniture etc. मीन्स खेती करने के लिए हम लोग जंगलों को काटते हैं, बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज बनाने के लिए हम लोग जंगलों को काटते हैं, तथा यही तरह जैसे कि हम लोग फ्यूल्स के लिए एंड मेकिंग फर्नीचर्स एक्सेट्रा के लिए हम लोग जंगलों को काटते हैं. तो यही सब मेन कारण है डिफॉरेस्टेशन के. The natural cause of deforestation are forest fire and drought. Natural cause क्या होते हैं हमारे डिफॉरेस्टेशन के? आर फॉरेस्ट फायर एंड ड्रॉट. मीन्स ये जो हमने ये थर्ड पिक्चर देख रहे हैं, ये जो आग लगी हुई है, ये नेचुरल आग होती है. तो इससे भी हमारे जंगल नष्ट होते हैं. ये देखिए, ये सूखा पड़ा हुआ है, जो नेचुरल कॉजेज हैं डिफॉरेस्टेशन के. कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन मीन्स हमारे डिफॉरेस्टेशन के क्या परिणाम है वो देखते हैं. द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर फर्स्ट, इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ. मतलब कि जो अर्थ है हमारी, उसमें टेम्परेचर तथा पॉल्यूशन लेवल को इंक्रीज, जो पॉल्यूशन लेवल इंक्रीज हो रहा है वो डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी हो रहा है. इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग. जो इनकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड में इंक्रीमेंट हो रहा है, जिससे जो हमारा वातावरण है वो उसमें जो ग्लोबल वार्मिंग है वो तेजी से बढ़ रहा है, जिससे हमारा एटमॉस्फेयर गर्म हो रहा है और इंक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है. लोअरिंग ऑफ द ग्राउंड वाटर लेवल. मतलब जो हमारा ग्राउंड वाटर लेवल है वो लगातार घटता जा रहा है बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. डिस्टर्ब्स द बैलेंस इन नेचर. मीन्स जो प्रकृति है उसमें बैलेंस डिस्टर्ब होता जा रहा है. डिक्रीज इन रेनफॉल लीडिंग टू ड्रॉट. मीन्स हमारे जो क्या नाम है, पानी जो होता है वो बरसना कम हो जा रहा है, जिससे सूखा पड़ता जा रहा है. soil erosion and decrease in soil fertility leading to the desertification. मीन कि जो हमारा soil erosion है, मृदा अपरदन डिफॉरेस्टेशन की वजह से ही हो रहा है. decrease in the water holding capacity of soil leading to floods. मीन्स जो पेड़ पौधे होते हैं, देखिए जो ये कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो परिणाम है वो कैसे होते हैं. जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी वजह से क्या होता है, पहला पॉइंट जो लिखा है हमारा, इंक्रीज इन द टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ. मीन जब हमारे पेड़ पौधे होते हैं तो वो शीतलता प्रदान करते हैं तथा एक शुद्ध हवा देते हैं. लेकिन अगर ये पेड़ ही नहीं होंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तथा पॉल्यूशन लेवल भी
बढ़ेगा। मीन्स वो ना हवा को ना वो शुद्ध हवा देंगे, और जो हमारे यहाँ जो पॉल्यूटेड एयर्स हैं वो ही पूरे संसार में रहेंगे, जिससे पॉल्यूशन लेवल इंक्रीज हो जाएगा। सेकेंड है इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर लीडिंग टू द ग्लोबल वार्मिंग। इट मीन्स जो पॉल्यूशन जो जो धुएं हैं, कार के धुएं हैं, फैक्ट्रीज के धुएं हैं, जिनसे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जो पेड़ होते हैं वो उसे अवशोषित कर लेते हैं। लेकिन जब पेड़ ही नहीं होंगे तो वही कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में रहेगी, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। लोअरिंग ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल मीन्स जो ग्राउंड वाटर है, क्या होता है कि जब पेड़ होते हैं तो वो पानी को रोक लेते हैं, जिससे ग्राउंड वाटर लेवल जो होता है वो इंक्रीज होता है। बट अगर जब पेड़ ही नहीं होंगे तो क्या होगा, वही ग्राउंड वाटर लेवल घट जाएगा। डिस्टर्ब द बैलेंस इन नेचर, मतलब हमारे नेचर में जो बैलेंस है पानी का, हवा का, और क्या नाम है जीव जंतु, सब चीज का बैलेंस बेकार हो जाएगा अगर पेड़ नहीं होंगे। डिक्रीज इन रेनफॉल लीडिंग टू ड्रॉट, पेड़ नहीं होगा तो पानी पानी भी नहीं बरसेंगे, क्योंकि जो बादल होते हैं वो पेड़ों के माध्यम से ही जो पेड़ होते हैं वो बादलों को ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिसकी वजह से रेनफॉल होता है। अगर पेड़ नहीं होगा तो रेनफॉल नहीं होगा, जिसकी वजह से सूखा पड़ता है। सॉइल इरोजन एंड डिक्रीज इन सॉइल फर्टिलिटी लीडिंग टू डिसर्टिफिकेशन। इट मीन्स जो जब पेड़ होता है तो उनकी जड़ों से जो मिट्टी होती है वो एक जगह स्थिर हो जाती है। पर जब पेड़ ही नहीं होंगे तो जो मिट्टी होगी वो कट कट के बह जाएगी, जिससे सॉइल इरोजन होगा। और अगर जब मिट्टी ही बह जाएगी, ऊपरी मिट्टी, तो जो हमारा क्या नाम है सॉइल फर्टिलिटी है वो भी घट जाएगी। डिक्रीज इन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल लीडिंग टू फ्लड मीन्स वो, इसका भी मतलब यही है कि जो मिट्टी होती है उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो सॉइल की होती है वो घट जाएगी, जिससे बाढ़ आने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। सो दिस इज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट, ड्रॉट। Fewer trees would means that less carbon dioxide will be used up, resulting in its increased amount in the atmosphere. Okay, this will lead to global warming as CO2 traps the heat rays reflected by the earth. This will lead to global warming as CO2 traps the heat rays reflected by the earth. The increase in temperature on the earth disturbs the water cycle and may reduce rainfall. This could cause drought. Okay, मतलब जो क्या नाम है रेनफॉल रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा सूखा पड़ता है। Desertification. What is desertification? It is removal to top layer of soil exposes the hard and rocky lower layer, which have very less humus and air. As they are less fertile, soil become like desert. It is termed as desertification. Okay, यहाँ कोई उपज नहीं होती है, मीन्स बिल्कुल बंजर भूमि हो जाती है। इसी को हम लोग डिसर्टिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, removal of the top layer of the soil exposes the hard and rocky lower layer, which have very less humus and air. As they are less fertile, soil becomes like desert. It is termed as desertification. Conservation of forest and wildlife. कैसे हम लोग उनको संरक्षित रखते हैं, जैसे कि forest and wildlife can be conserved by setting up areas like Biosphere Reserve, wildlife sanctuaries and national park के थ्रू हम लोग conservation of forest and wildlife करते हैं। First is Biosphere Reserve. What is Biosphere Reserve?
are large areas of protected land for conservation of biodiversity and the traditional life of the tribal living there. Okay, national parks are area reserved for wildlife where they can freely use the habitat and natural resources. Wildlife sanctuary are areas where animals are protected from any disturbance to them and their habitat. So these three are the conservation of forest and wildlife. What? Biosphere reserve, national park and the wildlife sanctuaries. जो बायोस्फीयर नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के माध्यम से हम लोग फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को संरक्षित रख सकते हैं. This is the pictures of these types of parks, sanctuaries and reserves. So first we discuss about biosphere reserves. Biosphere reserves are large areas to protected lands and conservation of biodiversity and the traditional life of the tribal living there. Biodiversity is the variety of plants, animal and microorganism found in the area. So इसके अंदर जो बहुत सारे वेराइटी ऑफ प्लांट्स हैं, बहुत सारी वेराइटीज ऑफ एनिमल्स एंड बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड इन दिस एरिया. So this is the biodiversity. The Panchmari Biodiversity Reserve consists of a national park called Satpura and two wildlife sanctuaries called Pori and Panchmari. Okay, so this is a biosphere. What is flora and fauna? तो flora are the plants found in the particular area. एक particular area में जहाँ पर plants पाए जाते हैं, it is called a flora, and the fauna is the animal found in the particular area. जिस particular area में बहुत सारे animals पाए जाते हैं, this is called a fauna. Means flora and fauna. Flora are the plants found in the particular area. It is called a flora. And fauna are the animals found in the particular area. It is called a fauna. Example, the flora of Panchmari consists of sand, teak, wild mango, jamun, silver fir, etc. This is the plant's name. So it found in particular area. That's why it is called a flora. And the fauna of Panchmari consists of wild dogs, cheetal, wolf, leopard, blue bull, barking deer, etc. This is the name of some animals. So it found in particular areas. That's why it called fauna. So it's clear that what is flora and what is fauna. Flora are the plants found in the particular area, and fauna are the animals found in the particular area. This is the pictures of this first picture shows that the plants in the particular area, second is also and third is also, so it is called a flora. And जो नीचे के figures हैं animals, so it is called a fauna. Endemic spices means endemic spices are those spices or plants and animals found only in a particular area and not found everywhere else. ये ऐसी स्पीसीज होती हैं एंडेमिक स्पीसीज जो एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं, हर जगह नहीं पाई जाती. उन स्पीसीज जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स जो एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं, हर जगह नहीं पाई जाती, इट इज कॉल्ड एंडेमिक स्पीसीज. So examples is sal and wild mango are the endemic flora of Panchmari. Bison, Indian giant squirrel and flying squirrel are the endemic
fauna of this area. This picture shows that this is the endemic species. Wildlife sanctuaries. अब wildlife sanctuaries के बारे में पढ़ेंगे. What is wildlife sanctuaries? Are the area where animals are protected from any disturbance to them or their habitat. The killing or capturing of animals in wildlife sanctuary is strictly prohibited. Means wildlife sanctuary के अंदर जो animals पाए जाते हैं उनकी killing और capturing it is strictly prohibited. मतलब बिल्कुल ही रोक है वहाँ पर. उन पे कुछ भी अत्याचार नहीं हो सकता. So यहाँ पर wildlife sanctuaries are the areas where the animals are protected from any disturbance to them or their habitat. Next is national park. National parks are the areas reserved for wildlife where they can freely use the habitats and natural resources. जैसे सतपुरा National Park is the first reserve forest in India. So national parks are areas reserved for wildlife where they can freely use the habitat and natural resources. Okay. Project Tiger. What is the Project Tiger? Project Tiger was launched on 1st of April 1973 by the Government of India. The project aims at ensuring a viable population of Bengal tiger in their natural habitat and also to protect them from extinction and preserving areas of biological importance as a natural heritage forever represented as close as possible. The diversity of ecosystems across the tigers distributions in the country. The project's task force visualized these tigers reserve as breeding nuclei from which surplus animals would migrate to adjacent forest. So this is the Project Tiger which is launched on 1st April 1973 by the Government of India. This picture shows that the Project Tiger is a wildlife conservation movement initiated in India in 1973 to protect tiger. It has been one of our most successful conservation venture in recent time. ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था कब 1 अप्रैल 1973 को और ये एक प्रकार से बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल कंजर्वेशन था टाइगर्स के लिए. So the project aims at the tiger conservation. It is aimed the tiger मतलब टाइगर्स जो विलुप्त हो रहे थे हमारे तो उनको सुरक्षित रखने का ये सबसे सफल प्रयास था जो कि स्टार्ट हुआ था 1st अप्रैल 1973 को. The project aims at the tiger conservation especially in tiger reserve which are representatives of various biogeographical regions falling within India. The project aims at stabilizing the population of the tiger in the country. So this is all about the Project Tiger. Next, what is Red Data Book? Red Data books look like this and this. The book provides a central information sources in organizing studies and monitoring programs on rare and endangered species and their habitats. It is regularly consulted
when developing and implementing special measures for the protection and rehabilitation of such species. मीन्स जो रेड डेटा बुक्स है उसके अंदर उन प्रजातियों को डाला जाता है जो इंडेंजर है, मतलब जो एक संकट की स्थिति में है, जो प्रजातियां हमारी संकट की स्थिति में है, जो कभी भी विलुप्त हो सकती हैं, उन 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 स्पीसीज के नाम इस रेड डेटा बुक्स में अवेलेबल है. So the book provides the central information sources in organizing studies and monitoring programs on rare and endangered species and their habitats. It is regularly consulted when developing and implementing special measures for the protection and rehabilitation of such species. Okay, this is Red Data book. Endangered animals, जैसे कुछ endangered animals हैं. Endangered animals are those animals whose numbers are diminishing and might face extinction. Example, tiger is one of the many animals which are slowly diminishing. To project the tiger is our country, the government launched the project tiger. जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट स्लाइड है प्रोजेक्ट टाइगर. So this is the project. The tiger is our country. The government launched the project tiger to ensure the survival of tiger populations. Dinosaur have already become extinct. मीन्स वो एक तरीके से विलुप्त हो चुके हैं. Red data books are books which keep the record of all the endangered plants and animals. Okay. The part of the whale. This is dinosaur. This is tiger. This is elephant. This is bear. This is also dinosaur. So, endangered animals are those animals whose numbers are diminishing. So, this is all about the endangered animals. Ecosystems. An ecosystem consists of all plants, animals, and microorganisms living in an area along with the non-living components like climate, water, soil, river, deltas, etc. So, what is ecosystem? Ecosystem consists of all plants and animals and microorganisms जो कि रह रहे हैं कहाँ पर? Along with the non-living components like climate, water, soil and river deltas में जो plants और animals और microorganisms रह रहे हैं उन्हीं को हम लोग ecosystems कहते हैं. This is called the ecosystems. Okay. Migration. Migration means एक जगह से दूसरे जगह पर जाना. ऐसे पक्षी जैसे कुछ पक्षी होते हैं जो गर्म स्थान होता है, जब वहाँ ठंडा पड़ता है तो वो किसी और स्थान से दूसरे स्थान पर जाके निवास करते हैं, फिर जैसे ही ठंड गर्मी आती है तो फिर वो वापस आ जाते हैं. तो कुछ ऐसे पक्षी भी हैं जिनको माइग्रेशन के फॉर्म में जाना जाता है, जैसे कि माइग्रेशन is the movement of the animal from its own habitat to some other habitat for a particular time period every year due to climatic changes of or for breeding. Okay. Birds which fly very long distance to reach another land are called migratory birds. वह बर्ड्स जो बहुत ज्यादा दूर फ्लाई करके चली जाती हैं उन बर्ड्स को हम लोग माइग्रेटरी बर्ड्स भी कहते हैं. So migration is the movement of animals from its own habitat to some other habitat for a particular time period every year due to climatic changes or for breeding. Recycling of पेपर्स. अब रिसाइकलिंग ऑफ पेपर्स क्या होता है? About 17 full grown trees are required to produce 1 ton of paper.
Paper can be recycled about 5 to 7 times for use. We should save, reuse and recycle paper to save not only trees but also to save the energy, water and chemical used to make paper. So recycling of paper is very important because it is made by trees also, that's why it is very important. So about 17 full grown trees are required to produce 1 ton of paper. Paper can be recycled about 5 to 7 times for use. We should save, reuse and recycle paper to save not only the trees but also to save the energy, waters and chemical used to make paper. रिफॉरेस्टेशन. अब रिफॉरेस्टेशन क्या होता है? रिफॉरेस्टेशन इज द रीस्टॉकिंग ऑफ destroyed forest by planting new trees. Planting new trees, it's called a reforestation. Okay, we should deforestation. It is the antonyms of the deforestation. What? Reforestation. We should plant at least as many trees as we cut. जितने भी हम लोग ट्रीज को कट कर रहे हैं उससे ज्यादा हमें पेड़ लगाने चाहिए. We have already caused a lot of damage of to all our forest. हम लोगों ने वैसे ही बहुत सारा लॉस कर दिया है अपने फॉरेस्ट का. If we have to regain our green wealth, reforestation is the only option. अगर हम लोग अपने ग्रीन वेल्थ को इंक्रीज करना चाहते हैं, रिगेन करना चाहते हैं, तो जो रिफॉरेस्टेशन है यही एक ऑप्शन है हमें. हमारे हमारे वाटर लेवल को, हमारे ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने का, हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो प्रोड्यूस हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस गैसेस जो इंक्रीज हो रही है, तो उनको रिड्यूस करने के लिए हम लोग रिफॉरेस्टेशन का यूज करते हैं. और यही एक ओनली ऑप्शन है जो रिगेन करेगा आवर ग्रीन वेल्थ को. दैट्स व्हाई रिफॉरेस्टेशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट. पेड़ लगाना चाहिए बहुत सारे. सो थैंक यू क्लास.